ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि फोर मोर शॉट्स प्लीज, जिसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो चुका है। तो फोर मोर शॉट्स प्लीज एंड द आइडिया ऑफ देयर फेमिनिज्म, बिकॉज मुझे लगता है जो उनका आइडिया फेमिनिज्म है वो नॉर्मल आइडिया फेमिनिज्म से काफ़ी अलग है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? हाँ, अलग तो है वैसे। मैंने जैसे सीजन 1 भी देखा था, सीजन 2 भी अभी देखा है। तो सीजन 1 से मुझे सीजन 2 थोड़ा बेटर लगा, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स मुझे दिखे। बट बिफोर वी जंप टू लूप होल्स, पहले श्वेता का भी ओपिनियन जान लेते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट अशम, सीजन 2 से मुझे सीजन 1 बेटर लगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दे वर इन सीजन 1 दे न्यू व्हाट दे वांट देयर कैरेक्टर्स टू बिकम एंड व्हाट दे वांट देयर कैरेक्टर्स टू डू। और सीजन 2 में देयर वाज अ lot of angles that they wanted their characters to explore, and something went haywire in the middle. मुझे भी कुछ कुछ ऐसा लगा, क्योंकि आई थिंक उनका अटेम्प्ट टू मेक अ बेटर सीजन वाज गुड। मतलब उनका अटेम्प्ट था, वो दिख रहा था कि उन्होंने ज़्यादा एफर्ट डाला है राइटिंग में। बट उनकी जितने भी उन्होंने एक्सप्लोर किए थे, भले ही वो एक वो जो वर्क प्लेस पे जेंडर बायस का टॉपिक हो, या फिर एक इंडिपेंडेंट सेक्सुअल लाइफ का हो, वो बहुत शैलो थे। मतलब सरफेस लेवल पे रह गए, कुछ अंदर उनकी डेप्थ नहीं थी। ऐसे ही लिखा और सॉल्व हो गया, काइंड ऑफ एपिसोडिक था बहुत। एक प्रॉब्लम आई, उस एपिसोड के एंड में सॉल्व हो गई, दूसरी आई, दूसरे के एंड में सॉल्व हो गई। आई थिंक मुझे थोड़ा वैसा लगा सेकंड सीजन भी। मुझे ऐसा लगा कि दे वांटेड टू टेक इट समवेयर एज मॉडर्न day women, modern day independent women to be sure, but in each one of their episodes they weren't independent. Independency वहाँ आती जहाँ she could have fought that problem on her own, made a decision, moved on, but she needed maybe her ex-husband or a boyfriend or somebody else to help her get through it. There's nothing wrong with it, but it gets wrong when they're trying to portray four independent women. ऑल्सो पूरे सीजन में मैंने बहुत बार एक ही वर्ड सुना है, एंड दैट वाज क्लोजर। उन्हें हर एपिसोड में एग्जैक्टली, they were just आई एम स्टक searching विद for दैट closure. वर्ड। व्हाट इज क्लोजर? In every episode they were looking for closure. Apart from all these problems, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते, फिर भी उनके पास क्लोजर तो था ही नहीं। एंड सबसे बड़ा उनका आई थिंक एक चीज जो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट थी, वो थी इनकी केमिस्ट्री। बिकॉज आपस इन चारों, द केमिस्ट्री बिटवीन दीज फोर कैरेक्टर्स वाज एक्चुअली गुड। इट वाज फन टू वॉच, like beautiful clothes, beautiful people, beautiful locations, and the chemistry was actually working. But एक जो मुझे प्रॉब्लम सीजन 1 के साथ भी थी और सीजन 2 के साथ भी थी, इनकी एंडिंग बहुत डिफरेंट होती है Fake थी। पूरी सीरीज से। तो तुम्हें क्या लगा इनकी एंडिंग, इस सीजन की एंडिंग? बिकॉज आई थिंक अब स्पॉयलर्स दे सकते हैं, बहुत टाइम हो गया रिलीज हुए इसको। हैव टू क्रैक इट डाउन टू एवरी एपिसोड की एंडिंग। सी, देयर आर सम सीरीज जो जिनके हर एपिसोड के एंड इज अ क्लिफ हैंगर फॉर द अदर एपिसोड। इन केस हाँ, ऑफ दिस सीरीज, पहले 4 या 5 एपिसोड के बाद मैं इतना तंग आ गया था वो क्लोजर वर्ड सुन सुन के, या सेम रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स देख देख के, कि वो क्लिफ हैंगर रजिस्टर ही नहीं हुआ कि नेक्स्ट एपिसोड तुरंत देखना है। एंड प्लस एंड में जो हुआ 10th एपिसोड के एंड में, तो लास्ट 10 मिनट्स वेर वेरी हेवायर। मतलब सब प्रॉब्लम्स एक साथ आ गए और खत्म हो गई सीरीज। थोड़ा और खींच, मतलब थोड़ा और इलेबोरेटली दिखाते अगर, तो अच्छा लगता। टाइम ले सकते थे वो ये दिखाने के लिए। हाँ, श्वेता? मुझे ऐसा लगता है कि दो कैरेक्टर्स व्हिच आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड विद इज द बेसिकली दैट सिंगल वाज हर मॉम। गोल हाँ, ना, कि हाँ मैं करूंगी एंड इट इज गोइंग टू बी माय चॉइस। उससे वो रिवॉल्व होकर इस पे आ गया कि मुझे किससे वैलिडेशन मिल रहा है, व्हिच शी वाज कंप्लीटली अगेंस्ट। उसने जब बानी को भी बोला, गुरबानी जी के कैरेक्टर को भी बोला था कि यू गाइज डोंट नीड अदर पीपल टू डिफाइन यू, वो हमेशा से फर्स्ट सीजन से वो इस चीज को प्रेशराइज करती आ रही है। ऑल ऑफ दैट वेंट टू हेल इन द एंड व्हेन शी वेंट and apologized to उसकी वाइफ से शिबानी। जाके, हाँ, शिबानी दांडेकर शिवानी को दांडेकर जाके। से जाके जब वो apologize कर दिया, that was the worst part for me, क्योंकि I don't think she should have gone and apologized. She should have gone and told her कि you need to move on because if this is the man you're living with, I know I did something wrong. That was okay to accept कि मैंने गलती की. Her exact lines was I'm sorry I ruined your marriage. पर उसकी गलती नहीं थी उसमें. It was the man. तो अगर वो एक शो बना रहे हैं about an independent woman focusing on her morals, that was an absolute low. क्योंकि that just goes against everything you've done.
वो एक साइड से स्टोरी लेके चली थी ना. It was just poor writing. So what about the performances? लेकिन I really enjoyed Preeti Kulhari as Anjana the No. season 2 as well. I think the worst, I can say the worst performance was by Bani and Samara. तुम्हें performances के बारे में कैसा लगा उसके? मुझे मिलिंद सोमन कैरेक्टर आमिर, डॉक्टर आमिर का जो कैरेक्टर था वो मुझे एक पॉइंट के बाद बहुत डिप्रेसिंग. उन्होंने उसका कैरेक्टर एज अ मिस्टीरियस पर्सन बिल्ड किया था, पर उन्होंने उस चीज को भी Yeah. कंप्लीटली रुइन कर लिया. उन्होंने उसके कैरेक्टर को बदल दिया एंड देन दे गॉट हिम इंटरट्वाइंड विद द फोर, विद द फैब फोर. दैट वाज द वर्स्ट, क्योंकि इन द एंड दे कट हिम ऑफ. इन द एंड उसकी प्रतीक गब्बर के साथ ही अगर केमिस्ट्री दिखानी है तो व्हाई दैट वाज अ एंगल दैट डिडंट रियली वर्क आउट. दे डिडंट carry on with the pregnancy. Plus the thing was कि अचानक से that guy एक episode में you are telling कि वो बंदा he has impregnated very like many women and he's not serious about life, he can do this stuff, and then अचानक से that guy who did not want any responsibility is going and asking her without confessing his feelings for her कि I'll take care of the child. He has done And it in the you past come with as me well, to no? Singapore. या तो हाँ, वो confess करे कि I love you. हाँ वो कि या तो he loves her तो justify हो जाता है, but he doesn't. Even अचानक they से handled the topic of LGBTQ pretty pathetically, according to me. The way Umang Singh came out to her family wasn't justified to her character. ऐसा मुझे लगता है. They could have made an there are a lot episode. of problems that like they go through. Her family was Exactly. just like done and dusted. कि I'm so independent, I don't care about my family. But guess what? Yeah. India में ऐसे नहीं होता. They could have done so much with it. When Samara started to feel better, she could have brought Samara home. So basically now we all agree on the part कि writing में there was the problem. So now moving on to the good parts. So अगर हम बात करें कि what was actually good in the series, so just tell me about the things that you find that were actually like better and good this time in both the seasons. See, one thing was how Anjana fought with the boss. तो वो एक Yeah. सीन Oh था my जो God, I बहुत love अच्छे that से scene. दिखा है, वो बहुत अच्छा दिखा है और सोचना पड़ रहा है बहुत. I think Damini Shweta was Rizvi Roy, when she was fighting for her book, मतलब कि हाँ मुझे लिखनी है, that part was shown really beautifully, but then it all went to hell क्योंकि उसने एक कार्तिक आर्यन मोनोलॉग दिया वहाँ पे about politics and about writing about politics, and then the entire thing was done. She was famous and they मतलब that there are was like scenes. a YouTube comment section plays live तू ऐसी है तू पाकिस्तान जा and she's like मैं नहीं जाऊंगी ये मेरा but When like the Pratik good Babbar part said was the yeah scene. only the good thing that I found like the clothes they were good so but the thing is that when you say that I'm living off my saving पहली बात you are dressing up like a rich celebrity तुम्हारे घर को देखो एक बार it's posh in Mumbai if you can find a house like that you do not need to worry about money And first episode we saw her cribbing for a business class seat in the airplane. yeah but I think we Unnecessary. all have to agree that when they walked down the aisle for the wedding it was a beautiful scene like in Udaipur when they like the They brides are spent coming dressed lavishly up on costumes, lavishly on the sets. It was yeah beautifully curated, but अगर उसका 10% भी they could have invested for a better writer maybe. I yeah probably I should think the say writing this, but was quite but क्योंकि then again the just the look but it was a I think ये series can become a guilty pleasure for a lot of people because you cannot बहुत लोग confess नहीं करेंगे but you like to watch good people in good clothes almost with no problems in life getting solved quickly and then it was a good watch to like experience during quarantine because आप बाहर देख सकते हो at least कि सुंदर है जगह but I अरे feel लेकिन कि more of the shows that Amazon Prime has made, like पंचायत हो गया या फिर if you talk about Made in Heaven, they stuck to the story. They yeah their gist is that they stick to the story. Even through one, I think we can all agree कि each of their episode has a new tornado coming in, and sometimes it's just gone, and sometimes they show it beautifully. The devastation कभी कभी वो नहीं दिखाते, कभी कभी it's just like हाँ हाँ ठीक है हुआ गया. मतलब it was a little if you rate it disappointing. against Inside Edge, where Saini Gupta is also there, that also has a pretty good storyline according to और me. अगर And yeah Family Man, अगर या अब जैसे देखो फैमिली मैन एंड ये शोज दीज आर काइंड ऑफ अ डिफरेंट लाइफ. जैसे ब्रीद वगैरह दीज आर बेस्ड ऑन अ मिडिल क्लास earning society. These people are shown from a higher class, so this show can best be compared with Made Made in in Heaven. Heaven. It's say it's dealing with same kind of people, and yet
those people have the same problems. They have problems in telling their families about their life. They have problems in accepting to their families that they have a boyfriend. But these girls have, and the And you conversation, मतलब सयानी गुप्ता का जो उसके पेरेंट्स के साथ conversation था about she being pregnant out of a wedlock, it could have been done beautifully. They could have come, they could have मतलब at least shown some sort of an emotion rather be on the phone and saying ki I'll help you, we are always there for you. again, the thing is that I don't have a problem with cinematography, and I think the main thing was writing, which was lagging a bit, and it was all like surface level. But again, like, so I think to conclude with my final views will be that the idea of feminism is actually in season 2 it was better, but they need to understand how they want to present it, because again I think the two seasons for me become like how women do not want to be. These four are the prime examples of that. You do not want to be like them for sure. I Yeah, think I that don't is want to my be in my final 30s verdict on this not series. knowing what I'm doing. Yeah, I think that will be my final take on four more shots, please, 1 and 2. That please do not be like these four women. I like the entire concept of women being free of boundaries, any kind of boundaries. I think that's what they were trying to show. But somewhere, in real life, there are. Okay, and if you're saying you're trying to show a character that is in their multiple interviews have said कि हम एक ऐसा character दिखा रहे हैं जो actually exist करता है, but it's inside us, we don't show it. So then why not explore the angle of why don't we show it? इट्स लाइक तुम उधर साउथ बॉम्बे में जाके चलोगे तो ऐसे लोग तुमको मिल जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। ऐसे लोग, उधर के लोग ऐसा बनना चाहते हैं, दैट इज हाउ यू शुड प्रोजेक्ट इट। Yes. Yeah, there is going to be a season 3. They have approved, they'll start shooting it soon, as soon as the lockdown opens, and then we'll see what they do with season 3. I'm not expecting it to be too good, but I may expect something better again next Yeah. time. I hope that it gets But better. I think we can give 2 minutes to discuss what you think would happen इसके आगे. Can we? I think next video में, because अभी हाँ, we बहुत can do a part 2 लंबा हो on what we can expect from 4 Yeah, more. yeah, श्योर yeah. श्योर श्योर All right.